right? So is the realignment and superimposition clear? How you can work on two different data sets and then superimpose one on the other? Is there any doubts? Any part you would want me to repeat? Should I move ahead? थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया? एक बार ऑप्शन मतलब मेनू बता दीजिए कहाँ से आपने सेलेक्ट सब कुछ जो भी ओके, सेलेक्ट थोड़ा सा जल्दी में हो हाँ गया था तो मैं, हाँ एग्जैक्टली, तो मैं वही करती हूँ, मैं एक बार वापस से ना पूरा आपके लिए रिपीट कर देती हूँ, ठीक है? तो ओके, अगर हम लोग को सपोज बस रफली बता दीजिए थोड़ा कि कहाँ से। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अंडरस्टूड, इसलिए मैं वही कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको समराइज कर लेती हूँ पूरा एमआरआई रजिस्ट्रेशन को, राइट? तो फिर आपको भी क्लैरिटी, जहाँ पे भी अगर आपको डाउट आया रहेगा तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो गोइंग बैक टू द स्टार्ट पॉइंट, बेसिकली फर्स्ट इज आपको जो दो डेटा सेट्स पे काम करना है उसको आप पहले ऐड कर लीजिए। तो वी हैव आवर सीटी, वी हैव आवर एमआरआई एडेड, राइट? नाउ first the first option is always to try and use image registration. तो image में automatic registration का आपका option रहता है, right? automatic registration पे जाइए, आपका एक fixed data set होगा, एक moving data set होगा. Generally we use CT as a fixed base and MRI as our moving image. Once we select, we can then superimpose as per the requirement, right? And as per the landmark points, we can take in landmark points and run registration as per that. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि अगर आपको किसी दो फाइल से आपको पहले से ही पता हो, अगर कि आपको सीटी से बोन लेना है और ट्यूमर एमआरआई से लेना है, तो आप सेम प्रोटोकॉल फॉलो करवाइए उनको अपने डिपार्टमेंट में, सीटी स्कैन डिपार्टमेंट से, फॉर द सीटी एंड एमआरआई, दैट इज द सेम नंबर ऑफ इमेजेस, द सेम कट सेक्शन एंड सेम एंगल ऑफ व्यूइंग, ताकि आपका सुपर इम्पोजिशन ईजी हो जाए. नाउ दैट वी हैव कंक्लूडेड कि इसमें सुपर इम्पोज नहीं हो सकता, तो अभी वील हैव टू इंडिविजुअली isolate the components from both the sets and then superimpose. तो सबसे पहले हम एमआरआई का डेटा सेट लेंगे, राइट? एमआरआई से अपने को ट्यूमर निकालना है, तो मैं मास्क बना के एमआरआई क्रिएट एमआरआई स्कैन के ऊपर एक मास्क बनाऊंगी एंड ट्यूमर एक्सट्रैक्ट करूंगी, सॉफ्ट टिश्यू, राइट? When I now generate the soft tissue tumor, what I am also going to do is I'm going to make sure that I'm not dependent only on one view, that is the coronal. After completing my designing on coronal, I'm also going to check on sagittal and axial to see if my borders are correct or not. Once I'm done with that, मैं calculate करूंगी ट्यूमर के पार्ट को. तो जब हम लोग ट्यूमर के पार्ट को कैलकुलेट करते हैं, राइट, तो दिस इज माई ट्यूमर, तो मैंने उसका मास्क बनाया एंड उसको कैलकुलेट किया. तो हम लोग जब फॉर दैट मैटर किसी भी पार्ट को कैलकुलेट करते हैं, तो उसका जो सीटी उसका जो इमेज होता है, राइट, इमेज सेट होता है, वो पार्ट उस इमेज सेट को असाइन हो जाता है. सो नाउ वी हैव एक्सट्रैक्टेड द ट्यूमर फ्रॉम द एमआरआई डेटा सेट, राइट? तो ये जो ट्यूमर का पार्ट है उसका विजिबिलिटी, जस्ट वन सेकेंड, आई थिंक इट्स ऑटो सेविंग, यस. तो जो ट्यूमर पार्ट है उसका विजिबिलिटी उसके एमआरआई डेटा सेट को हो चुका है. बट नाउ वी वांट टू विजुअलाइज दिस ट्यूमर ऑन टू विच डेटा सेट, ऑन टू द सीटी स्कैन डेटा सेट.
So you can go to the images option and click on to the lower extreme data set. Now see, it's not visible in the CT, in the MRI section. Why? Because आपने इसका visibility change कर दिया है. तो जब अभी मैं ये image data set change करूंगी to CT, what you observe is आपका ट्यूमर अभी यहाँ पे दिख रहा है. तो डज दिस एड्रेस योर डाउट कि आप कैसे इमेज डेटा सेट्स चेंज करेंगे एंड कैसे विजिबिलिटी चेंज करेंगे? राइट. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमने बोन के मास्क पहले से बना के रखे थे. सो दिस इज माय एक्चुअल बोन, राइट. बट व्हाट हैपेंस इज, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू है, राइट. एंड ऑन द बेसिस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू अलाइनिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. व्हाई? आई टेल यू. मैं इसका कॉन्टूर स्विच ऑन कर रही हूँ. तो आप देखेंगे ये यहाँ पे है जो हमने सीटी से डेटा निकाला, एमआरआई से डेटा निकाला है. ये सीटी में इट्स समवेयर, okay, it's not visible in the coronal view at all. Let's look in the axial view. Can we spot it in the axial view? No, you can only spot it in the sagittal view, which is here somewhere, right? So now we have to superimpose it on the bone, but we don't have any landmark points here, to accurately superimpose this. So what we'll do is we'll go to the MRI and extract some bony tissue that will give us the landmark points. What I had done is I had extracted the lowest or the distal most part of the femur. Why? Because this gives me landmark points to match, right? But now I don't want to individually move this. I want to club. मतलब मुझे जो movement चाहिए, मुझे एक साथ चाहिए. मेरा फीमर का जो लोएस्ट पार्ट है, मेरा ट्यूमर एक साथ मूव करना चाहिए ताकि मुझे एग्जैक्ट लैंडमार्क पॉइंट्स मिले. तो मैंने उसके लिए पहले क्या किया, ताकि मेरे दोनों कंपोनेंट एक साथ मूव हो, मैंने उन दोनों कंपोनेंट को मर्ज किया. मर्ज कैसे किया? I went on to 3D tools. I selected the option of merge, right? जैसे merge है वैसे यहाँ पे split option भी है. So after merge you can also split the option components. So merge, I selected both my components that I wanted to merge and I clicked on OK. So once you click on OK, a component something similar to this is formed, right? इसके बाद मैंने किया point registration. उसके लिए मैं गई align पे, मैंने किया point registration, right? So my movable entity is my merge of tumor. I'm going to add point. I'm just repeating this ताकि आपके doubts जो थे वो clear हो जाए. I'm going to again add these points. Right, I'm going to click OK. तो ये मोटा मोटी इस पे सुपर इम्पोज हो गया. बट इफ वी सी स्टिल एंगुलेटेड इन अ वेरी डिफरेंट वे. तो वील हैव टू, अगर मैं देख रही हूँ तो ये कर्वेचर और इंटरनल कर्वेचर मैच नहीं हो रहा है. So what I'll now try is I'll try global registration once. So my movable part is merge of tumor. My fixed part will be wrap bone and I'm going to click OK. So now if you see, it's somewhere here, approximately. Approximation से ऐसा कुछ आ गया है. Now I'll switch on the contour and try and match the contour of the tumor that is visible here to that I have extracted from the MRI. In case मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, यहाँ के ट्यूमर या एंटिटी में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं मैनुअल रिपोजिशन से पोजिशनिंग से इसको सेट करूंगी, right? Where I can click on this. My selection has to be right, and I'm going to move this with mouse. So if you see, I'm going to move this here itself. So
I think slightly down. Slightly. I'm going to rotate it with mouse. Keep this as my axis window. Right. So in similar fashion, I'll just finalize it, and once I finalized it, my final part looks like this. Yep. So I hope this is clear now. Right? Any more doubts? Please provide RAR file of this patient, possible. I will We not be will able to share attach. this files with you because this is a patient data that we've received, Okay. and I'll not be able to share. That's the reason मैं पूछ रही थी. In case you have an MRI for any other patient, you can share with me. I can show on those files also. एक बार MRI and ये कैसे कर सकते हैं? So if you can check with the CT scan department and you can let me know. So चाहिए तो we can take that up also. Okay. Yes. So I mean, this is majorly the seminar part. This is it for today. Kuch doubt tha. I mean, we are still left with fixing functionality that I'm going to just address to clear your doubts. But other than that, any doubts in what has been taught today? I will then I'm just stopping my screen share, and going to the thematic view. Is the thematic screen visible? Yes. So I'm going to मैं क्या कर रही हूँ मैं वो वाला प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट करी आई एम गोइंग टू जस्ट शो यू कि अगर आपने इंपोर्ट किया कास्ट और आपको इमीडिएटली फिक्स करना होता है तो आप कैसे कर सकते हैं तो मिमिक्स में मैम प्लेन का भी बताना था. No. हेलो हाँ नहीं मिमिक्स का हाँ प्लेन मैम. आई डिड दैट वंस फ्यू मोर हाँ. पीपल इट एंड देन वी विल कम बैक एंड प्लेन्स का फिर सारा डाउट एक साथ क्लियर करेंगे फिलहाल फिक्सिंग हम कल जो पीएसआई करेंगे उसके लिए जरूरी रहेगा राइट
तो उस हिसाब से, बिकॉज कल जो पीएसआई के लिए प्लेन्स लेंगे, वील बी यूजिंग प्लेन्स इन व्हाट इज ए थ्रीमैटिक। तो जो मिमिक्स का प्लेन रिलेटेड क्वेरीज है, वील सॉल्व इट टुगेदर फॉर एवरीबॉडी। सो वील वेट फॉर अनदर डे और टू, ताकि सब लोग का एक बार ऑर्थोग्नाटिक प्रैक्टिस हो जाए, एटलीस्ट सिमुलेशन पार्ट मिमिक्स वाला, एंड देन जो भी सारे डाउट्स है फिर एक साथ एड्रेस कर लेंगे उनको। ठीक है, okay, so I'm going to file, I'm going to import part. What I'm going to import is, I'm going to import just our cast. So these casts are in their original form, ये simulated नहीं है। I'm just going to show कि अगर हमको yes, so this is the upper jaw. I'm just taking one component to show. Right, so जैसे मैंने import किया, I have these files. I'm just going to click on OK. Generally, since we know कि जो ये वाले files होते हैं, cast के files होते हैं, वो open surface files होते हैं, इसलिए हम लोग generally split surface और fixed normals नहीं use करते। Fixed normals and split surfaces generally closed surfaces के लिए use होते हैं। So I'm just importing the part, right? So here you have it. Your file is here. So what I'm going to do is I'm just going to hide this coordinate system. So if you want, if you don't want your coordinate system visible, you can go to the object review and right click onto it and hide it, right? Abhi, it's an open-ended surface, so we'll have to fix it, right? So coming back to our basics, any part which is a single component part should have only one shell, right? So first let's understand shell क्या होता है। किसी भी part को हम shell बोलते हैं। So this is your upper jaw STL, this forms your one shell, right? इसका मतलब ये जो upper jaw का STL है उसमें एक ही shell होना चाहिए, that is only the part itself. तो राइट, उसमें नॉर्मल्स नहीं होने चाहिए। बेसिकली ये जो आपको रेड कलर का सेक्शन दिखता है, दिस इंडिकेट्स द इंटरनल सरफेस, राइट? तो एनीवे जो बैक सरफेस रहेगा, आप कोई भी फाइल इसमें इंपोर्ट कीजिए, जो उसका ओपन एंडेड सरफेस रहता है या जो बैक सरफेस रहता है वो हमेशा रेड कलर में हाईलाइट होता है। इसका मतलब क्या है, ये फाइल क्लोज नहीं है, ये फाइल सॉलिड नहीं है, राइट? तो वी डू नॉट वांट अ ओपन एंडेड सरफेस। इसका मतलब ये है कि ये फाइल सब जगह से क्लोज होनी चाहिए, इसके ट्रायंगल्स या इसके नॉर्मल्स नहीं होने चाहिए, इन्वर्टेड नॉर्मल्स, राइट? अपसाइड डाउन नहीं होना चाहिए फाइल, द फाइल हैज टू बी क्लोज। come again, then coming on to borders, so if you see, if I go down here, these are uneven borders, right? ऐसे uneven borders नहीं होने चाहिए, filled होने चाहिए। uneven borders are also known as bad contours, तो फाइल में bad contours भी नहीं होने चाहिए। now this is just by visual analyzing I am able to say all these, but to actually see कि क्या क्या issue है फाइल में, we'll have to go to the fix and fix wizard, right? So I'm just going to click on to the part में जाके मैं upper jaw click करने वाली हूँ and I'm going to click update, right? मुझे intersecting triangles भी जानना है, so I'll just update this, right? The first thing that we see is, I mean you can follow these line, but as I told you, सबसे पहले shells fix करते हैं because that is the easy way around. So you first go to shells, you mark shell,
like we now know that this is the important shell. बाकी जो भी है shell वो noise है. तो मैंने जो important part है उसको click किया, shell marking select किया, फिर मैंने ये वाला shell को mark किया है. I'm going to invert this. When I invert it, whatever excess marked triangles I still have, I will delete it. So if you see, मैं zoom in कर रही हूँ तो दिखेगा कि ये छोटे shells ऐसे components है, तो इसको मैं delete कर दूंगी, right? Once you've deleted your shells, you have to go back to your diagnostics and you have to click on update. So now when I see, what I see is normal 0 दिखा रहा है, stitching 0 दिखा रहा है, no shells 0 है, holes ये एक single planar hole बता रहा है. So what does that mean is ये जो आपका पूरा open ended structure है, ये जो पूरा border है, इसको ये single hole consider कर रहा है. And if I click on apply here, what do you observe is उसने जो सारे edges थे, सारे खराब edges, bad contour था, उसको as a single component just fill in कर दिया है, which is wrong. You know, this causes us to lose our anatomy, right? You know, anatomical accuracy. So what we do is, I'm going to again undo it. मैंने Control Z किया, right? मैं अभी क्या करूँगी? मैं अपने fix wizard को close करूँगी, right? And now what I'm going to do is, I'm going to first fill in this hole. I'm going to make it solid. उसको solid बनाने के लिए क्या करेंगे? Fix में जाके bridges बनाएंगे and फिर इन bridges को individually as smaller holes fill in करेंगे, right? So I'm just creating my bridge. So now if you see, this file is very heavy to work with. So what I'm going to first do is, I'm going to reduce the size of the file. So right now आपको एक फाइल हैवी है या लाइट कहाँ से पता चलता है? उसके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देख के. तो इफ यू सी, इसमें अभी अप्रोक्सीमेटली 4 लाख ट्रायंगल्स है, व्हिच मेक्स द फाइल डेफिनेटली हैवी टू वर्क विद. तो अगर मुझे इसको फाइल को लाइट करना है, बेसिकली इसका रेजोल्यूशन थोड़ा कम करना है, तो देयर समथिंग, यू गो टू द फिक्स विजार्ड एंड देयर समथिंग कॉल्ड एज इम्प्रूव मेश. तो इम्प्रूव मेश क्या करता है? आपके ट्रायंगल्स को इम्प्रूव करता है. So my quality will be high, my geometrical error will be 0.1. You can reduce it to 0.01 or 0.5 also as per your requirement. I'm going to click apply. Right, I'm going to cancel this function. Now I want you to notice this. पहले इसमें कुछ approximately 4 lakh triangles थे, अभी इसमें कुछ 19,000 triangles थे. Now if you see, the file has become very easy for me to move also. Right? So basically file का जो ये है resolution है वो better हो गया है in terms of working with the file, right? So now I'll go to fix, create bridge. I'm going to create one bridge here, just in case. I'm going to create another bridge here. So there is no hard and fast कि आपको यहीं पे bridge बनाना है या नहीं. You just have to look into the shape कि आपका shape कौन से bridge बनाने से वो better आएगा. So I'll just take one bridge here also, just in case. And then I'm going to give one bridge here, one bridge here, one bridge here.
So basically, by bridging, what are we doing is we are defining borders. We are defining borders for the software to understand कि आपको इतने ही border को एक साथ में fill करना है, right? So again, what I'll do is I will define a curvature here. तो इंटरनली सी इसका कर्वेचर बहुत खराब है, तो मैं भी इंटरनली भी इसको एक बॉर्डर दे दूंगी, that we don't have to struggle later, right? So just internally given it a border. Now I'm going to use the mask hole filler option and click on the part and click apply. तो मेरे सारे parts या सारे holes भर चुके हैं. Now we have one solid surface. I'm going to just close this. create bridge के बाद mask hole filler option click किया था क्या? हाँ मैंने ओके मैं ये कंट्रोल Z कर रही हूँ, तो वी हैव इट. ठीक है, क्रिएट ब्रिज करके अभी मैंने बॉर्डर्स डिफाइन कर दिए कि कौन सा सेक्शन को आपको एक कॉन्टूर सिलेक्ट करना है. तो बेसिकली नाउ व्हाइल होल फिलिंग इट विल टेक मल्टीपल ऑप्शंस. तो अगर ये नोटिस करना है तो अपन फिक्स में जा सकते हैं, राइट? फिक्स, आई एम सिलेक्टिंग दिस पार्ट एंड आई वांट यू टू ऑब्जर्व कि जब अभी प्लेनर होल्स का नंबर है वो इंस्टेड ऑफ 1 आई थिंक अराउंड 7 या 8, हाँ 10 हुआ है. So now, right? So instead of now taking only one hole, it will take 10 holes, like 10 small defined holes, right? So you can click apply here and fill, or आप पहले ही mass hole filler. Basically, why I selected mass hole filler? क्योंकि ये एक साथ मेरे सारे borders को भर देगा, इसीलिए. तो मैंने mass hole filler select किया. इसके entity में मैंने part select किया, right? अगर आप individually भरते हो कि by fill hole free form या fill hole normal, तो आपको उसका एक एक contour select करना पड़ता है कि right you have to give contour. But for mass hole filler, my entity can directly be the part, right? I can just optimize the threshold value and I can click apply. So when I do that, all my holes are filled. And now when I go to fix and update, what you notice is आपके बाकी सारी चीजें, तो जो ये बैड कॉन्टूर्स, बैड एजेस, ये सब क्यों आ रहे थे? क्योंकि आपका पार्ट ओपन था, इट वाज नॉट अ क्लोज्ड पार्ट. सो व्हेन यू फिल इन दी होल्स एंड यू फिक्स द शेल्स, आपका मेजर प्रॉब्लम उसी में फिक्स हो जाता है. So now what I'll do is I'll just fix the noise shell. So I'll go to shells, right? I see there are 4 shells here, which is wrong, right? So I'm going to click on this main shell. So for shell marking, mark में जाके ये shell वाला option select करना है और shell select करना है. Once I've selected the shell, I'm going to now invert my marking. What invert marking does is हमारे main shell के अलावा और भी जो भी छोटे components या noise है उसको select करेगा, and then you can just right click and delete those. Now when I delete those and when I update it, my part is fixed, right? So this is basically how fixing works. राइट नाउ कमिंग बैक, आई थिंक एक डाउट था कि ऑटो फिक्स करने के बाद वो फिक्स विजर्ड नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ था, राइट? Yes sir. हाँ, तो आप व्हाट यूज्ड टू डू, यूज्ड टू गो टू फिक्स एंड ऑटो फिक्स फर्स्ट, क्या? What was the procedure you were following? If you can let me know, then what I'll do is I will. मैंने फिक्स विजिट भी पहले किया था लेकिन उससे हो गया था, लेकिन ओके, हेलो हेलो. हाँ तो हाँ हाँ मैम, इसके बाद फिर दोबारा से मैंने मतलब एरर्स फिर भी ठीक नहीं हो रहे थे, तो मैंने फिर दोबारा से फिक्स रिजल्ट के लिए जा रहा था, तो उस समय दिखा नहीं रहा.
ओके तो कैसा होगा ना, व्हेन यू गो टू फिक्स और सपोज आपका ये जो पार्ट है वो सिलेक्टेड नहीं रहता है, तो आपको ऐसा एक ब्लैक कंपोनेंट दिखेगा। हियर यू हैव टू फर्स्ट गो एंड क्लिक ऑन टू द पार्ट, तब जाके वो आपको दिखाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, अगर सपोज आई हैव रैंडमली सिलेक्टेड द फिक्स विजार्ड विदाउट सिलेक्टिंग द पार्ट फर्स्ट, राइट, एंड आई गो टू द फिक्स विजार्ड, ये एक ऐसा बॉक्स दिखाता है। नाउ व्हेन आई गो एंड सिलेक्ट माय पार्ट, इट गिव्स मी द ऑप्शन टू गो अहेड। तो एक बार ये चेक कर लेना कि इवन आफ्टर सिलेक्टिंग योर पार्ट इज इट शोइंग यू एरर और नो। ठीक है, okay then, I mean, then I think we can move ahead tomorrow with the uh, further things that are left. um, तो आई वुड रिक्वायर फ्यू स्कैन्स। मैम आई थिंक मैंने आपको एक लिस्ट भेजी थी स्कैन्स के लिए, उसमें से आपने एक मुझे जॉ का कुछ ओवीजे फाइल भेजा है। मे आई नो व्हाट इज दैट फॉर? हेलो, the meeting time is almost over any which way, so this is basically today's this is it for today's seminar. Baki ka I'll just call and speak with ma'am for the remaining thing, but any doubts in today's seminar? No, ma'am. Okay, then We will try, then we will sure, try. sure, sure. Then that's it for today, and tomorrow again at 11 o'clock. Yeah, thank you. Okay. Okay, thank you. Yeah, thank you.